Good afternoon, sir. So, very good afternoon, callers. I hope that you can hear me. Yes, sir. We'll start. Just let others join. We'll start in another 1 or 2 minutes. Okay. Till that, I'll show you some of the videos. Okay. Just have a look at it. Okay, can you see the screen, guys? Can you see the screen? Yes, sir. Sir, that is you don't only now. So, this video is about what we are going to start the new session. Satellite part has been done. Now we are moving to the drone parts. Okay. Then once the drone done, we'll be going for the rocket part. So today we'll try to finish the drone part. Then tomorrow we'll be starting with this. We call that rocket part. Okay. So let me play this. Just have a look at it. Just observe. I will ask some questions. Okay. Just observe it. Oh, okay. Okay. So what is your observation? Anyone? How many fans were like fans, right? Four, Were there? four. Okay. Four, sir. Okay. Good. Now I'll show you another drone. Okay. I'll show you another drone. I hope that you can see the screen, right? Just Yes, observe. sir. Yes, sir. Slow कर दूं? हाँ? ठीक है, तेल करेगा, तेल का. इनको जोर से दबाओ. Okay. Yes. Tell me, what is your observation? The first one. Okay, I'll show you one more. Okay. Sir, it don't successful. Sir, it is two wings and it is rolling. Down it is rolling. It's made up of thermocol and flash. Okay. Just have a look at this. Okay.
now one more video I'll be showing you. Okay. Just have the observation. Okay. I hope that you can see the screen. Yes, sir. Yes, sir. Okay. What you can see on the screen? A Yes, sir. boy who is Oh, flying that okay. Just look at it. drone who is flying. Okay. So I shown you 3 to 4 videos. Now tell me what's your observation? Yes, And Hijba. drone mechanism is Not this one. This is not a correct way. You have to raise your hand. Yes, Hijba. Tell me. So, sir, in first video, the drone gets successfully fly, Okay, but in let's leave about that other it is successful or unsuccessful. What is your observation? That is fine. Some success and what. Apart from that, what's your observation? um, Yes, Santosh. sir, first drone mechanism is different, and this bird mechanism is different. Material is different. The drone is made up of wooden, and the bird is made up of, first one is thermocol, second one is cardboard. First one was something like this, right? Yes, sir. First one have 4 fans, and second one did not have fans. It have 2 wings. And That's it, sir. second one was like this kind of bird model, isn't Yes, it? sir. Yes, sir. My drawing is not good. Don't laugh, okay? Nothing happened, sir. So it was. So these wings were flapping. So actually, this kind of drone we called as flapping drone. What is that? Flapping drone. flapping And drones. this basically used for spying purpose. Now it's not has come. If you have seen one movie has come, like I think 1 or 2 years back, Uri. In that they've used this Uri movie. Spying means in the border, what will happen? They'll use this drone. So the advantage is this will fly like a bird. So human cannot differentiate it is either artificial or a real one. Are you getting? Yes, sir. And we can take the advantage of it. Now, what is the problem with this drone? Anyone can identify, right? Because it is human made. But here, very difficult to identify either it is natural bird or artificial because it will fly like a bird. So for security, military purpose, we can use this. This is called as quadcopter. What is called? What purpose? There are different types of drones based on number of fans. Like if you have 3 fans, na, it is called tricopter. What is called? If you have 2 fans, it is called bicopter. If you have 5, it is called pentacopter. If you have 6, it is called hexacopter. What's called? So like the different types of drones. So the main purpose of showing the drone was to you, that video was to you, to just to make you understand that there are different types of drones. Okay, is it clear? So now let's start the session for today. So today we are going to start about introduction to drone technology. Like you all know that now, if you have attended some of the marriage, like seen before, what will happen? Like 1 year, 2 years back, and the person will capture the picture, video, and all. Like even if you see IPL match and cricket match, so when that it will go for the second umpire, right? If there is a out or not, it goes to the second umpire. So what will happen? They will close the camera and see that everything, and they'll give the decision, right? Not out or out, right? So that how happen? There's a drone something which is flying, and that will capture all the your information. Okay. So now there is a like as the technology is going, drone technology is coming into the picture. Even in your agriculture also, for farmers in the future we'll be going to use agriculture drones.
agriculture drones. So agriculture drones, in the sense, what will happen? They are uh, this sprinkling the pesticides and at all. It will finish within half an hour or less time. Like if farmer do manually, takes lots of time. But if it has done by the drone, it can finish very fast. Okay, so that is the thing. Fine. So let's start the class. So I hope you can see the screen. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So introduction to drone technology. So we are moving to the drone. Okay, so first thing. So these are the things which we are going to talk about in the drone part. So can anybody read it? So, Yes, Amrit. so content, introduction, history of UAVs, types of drones, working of drones, arrangement of motors, second driving of drone, second motion of drone, block diagram, components description, drone circuit connection, setup for flight controller, radio control celebration, ready for flying, India's UAV, applications of drone, future of drone, and conclusion. Okay, so these are the topic which we have to cover. We'll see today if we are able to cover, because we have only now 2 classes. That is tomorrow and day after tomorrow. And I think we'll be going for Sunday, and Sunday we'll be having the last class, right? And some of your exams are going to start, so I think Sunday will be fine. Or shall I wind up on Saturday? This So Sunday. Sunday, sir. Sunday No, will be fine, sir. right? Sunday Yeah. is fine. I will not take more Yes, than sir. 1 hour. Sunday, like otherwise, I have to wind up very hurry by Saturday. So I don't want to do that. So I'm thinking to wind up on Sunday. Will that be fine for everyone? Yes, Only for Yes, 1 hour. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. It's Let's fine. go ahead. So first thing is introduction. So can anybody read apart from Amrit the first thing? Yes, Hishba, Yes, can you sir. read that first sentence? Yes, sir. Yes. So, introduction. Drone is also called as UAV, unmanned aerial vehicle, which is Vehicle. having on flight control on vehicle. It is a device with an intense mixture of electronics, mechanical, and mainly on principle of aviation. It is an aircraft without human pilot. It is controlled autonomously by Autonomously. computers or under the Autonomous, remote This control of a autonomously pilot. means automatic. Okay. Autonomously, Yes. okay. It is controlled autonomously by computers on under the remote control of a pilot on the ground. Drone stands for dynamic remotely operated navigation equipment. Okay. So what is drone? So first thing you should know, what is drone? Drone is a kind of there is another name for Vehicle. drone is UAV. What is UAV? Unmanned aerial vehicle. Now name से ही आपको पता चल रहा होगा, मतलब ऐसा vehicle एरियल में ऐसा उड़ने वाला व्हीकल, ऐसा उड़ने वाली फ्लाइंग डिवाइस में कोई इंसान ना बैठता हो, एंड विच इज हैविंग ऑन बोर्ड फ्लाइट कंट्रोलर, मतलब इसमें कोई मेमोरी होता है, एक बोर्ड होता है, जैसे आपके कंप्यूटर में मदर बोर्ड होता है ना, उसी तरह से इसमें एक फ्लाइट कंट्रोल होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे पार्ट्स ऑफ ड्रोन में, कंपोनेंट्स ऑफ ड्रोन में। सो वो फ्लाइट कंट्रोलर होता है व्हीकल में जो इसको पूरा ऑपरेट करता है, एंड इट इज अ डिवाइस। आप बोल सकते हो ड्रोन क्या है, इट इज अ डिवाइस विद एन इंटेंस मिक्सचर ऑफ, जो ड्रोन होता है इसमें क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, मैकेनिकल पार्ट होता है, और प्रिंसिपल ऑफ एविएशन, मतलब कैसे उड़ता है, एंड इट इज एन एयरक्राफ्ट, आप इसको हवाई जहाज भी बोल सकते हो विदाउट ह्यूमन पायलट, एंड ये ऑटोमेटिक, ऑटोनोमसली मीन्स ऑटोमेटिक कंट्रोल किया जाता है बाय कंप्यूटर्स, इसमें प्रोग्रामिंग फीड कर दी जाती है और इसका एक रास्ता ऑटोमेटिक बना दिया जाता है, तो क्या करता है उस रास्ते पे जाकर के ऑटोमेटिक अपने पास वापस आ जाता है। तो इसमें हमें मतलब कि ऐसा रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं कहीं पे रह करके भी, तो रिमोट कंट्रोल ऑफ अ पायलट ऑन द ग्राउंड। और ड्रोन का फुल फॉर्म क्या होता है, डायनेमिक रिमोटली ऑपरेटेड नेविगेशन इक्विपमेंट, मतलब कि डायनेमिक में पता है जो मूव करता है, राइट, रिमोटली ऑपरेटेड मीन्स रिमोट के द्वारा, नेविगेट इक्विपमेंट मीन्स नेविगेशन के लिए, ठीक है ना, कोई ऑपरेशन के लिए, जैसे मान लीजिए कहीं पे बाढ़ आ गई, ठीक है, कहीं के अर्थक्वेक आया, कहीं पे सुनामी आई, तो वहां पे हम मैनुअली तो जाने, कोई इंसान जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, तो वहां पे क्या कर सकते हैं, इस ड्रोन को भेज सकते हैं, ठीक है, और फिर हम सारी मतलब कि
जो कैमरा उसमें अगर लगा होगा तो हम पिक्चर्स को कैप्चर करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. तो दैट इज हाउ, दैट इज व्हाट द नेम ड्रोन फुल फॉर्म इज, डायनेमिक रिमोटली ऑपरेटेड नेविगेशन इक्विपमेंट. यहाँ तक क्लियर है सभी को? और इस Yes, पिक्चर sir. में, Yes, इस पिक्चर में देखिए छोटा सा ड्रोन है. इसमें आपको 4 फैंस दिख रहे होंगे जिसको हम एविएशन की भाषा Propeller. में प्रोपेलर बोलते हैं. Propeller. आज की क्लास के बाद आपको फैन नहीं यूज करना है. क्या वर्ड यूज करना है फैन की जगह? प्रोपेलर. Propeller. एविएशन में हम क्या यूज करते हैं वर्ड? प्रोपेलर. Propeller. तो फैन को हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे 4 प्रोपेलर है तो इसको बोलते हैं क्वाड कॉप्टर. क्वाड मीन्स 4 होता है ना, मैथ में आपने पढ़ा है राइट? क्वाड्रिलेटरल. तो क्वाड कॉप्टर, जैसे हेलीकॉप्टर होता है ना वैसे क्वाड कॉप्टर. देखिए, चलिए इतना समझ में आ गया बच्चों? चलिए आगे चलते हैं. Yes, sir. Yes, sir. नाउ हिस्ट्री ऑफ यूएवीज. तो ये यूएवी का यूज कब से होने लगा, मतलब कब से ये एग्जिस्टेंस में आया? तो पहले क्या होता था, पहले के जमाने में लाइक इन द ओल्डन डेज Sir, can I? युद्ध होते थे राइट, आपकी लड़ाइयाँ होती थी राइट, एक देश की दूसरे देश की. तो वो क्या करते थे, इसमें क्या होता था, जो हवाई जहाज होते थे वो मतलब कि जब जाते थे तो क्या होता था, कभी एक्सीडेंट हो गया या दूसरे सेना ने मार गिराया तो उसमें क्या होता है, उनके पायलट की मौत हो जाती थी. उससे बचने के लिए क्या करने के लिए, एक्टिविटी को नोटिस करने के लिए ड्रोन्स को भेजा जाता है जिसमें कोई इंसान नहीं है, और फिर वहां पे उनके बॉर्डर पे क्या एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए ड्रोन को, अगर इन केस अगर दूसरी सेना उसको डिस्ट्रॉय भी कर दी थी तो उसमें कोई इंसान नहीं मरता है, कोई नुकसान नहीं होता. मीन्स in the olden days what happened when, like suppose here it is mentioned, birth of US UAVs began in 1959 when United States Air Force officers were concerned about losing pilots over hostile territory and they thought of unmanned flight. Means in the olden days, like when the fight used to happen right between 2 countries or many countries, so to look at the border, what are the activities happening from the other side. So if this they generally used to send the pilots and the fighter aircraft, but what will happen, other side they will just destroy that. So what will happen, in that pilot will also die. So in order to overcome to that, they thought for some device to manufacture some device which will be like a aircraft only, but in that no human will be there. So in case if they destroy also, so they will not lose the life of a people. So from there this UAV comes into the picture and they started to work on it. So in the year 1964, US Navy initiated America's highly classified Red Wagon UAVs into their first combat mission of the Vietnam War. So US Navy ने क्या 1964 में इन्वॉल्व किया रेड वेगन नाम का एक यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल फर्स्ट कॉम्बैट वॉर के लिए, मिशन के लिए ऑफ वियतनाम. ठीक है, ये आपका हिस्ट्री कैसे कैसे यूएवी आपका पिक्चर में आया. Before invasion used to happen, so in order to save the life of the pilot, because on that time, on those days, getting pilot was very difficult because it was very crucial. So military has to think about that life of pilot. So that's why they were thinking about some flight which is unmanned. So from there it came into the existence. Is it clear, guys, how UAV has come into the existence Yes, and sir. into the picture? Okay, next Yes, let's sir. talk about types of drones. Okay, so there are 2 categories. How many categories, guys? 2 categories. One is functional basis, another is structural basis. So जब आप functional basis बोलते Structural हैं, basis. so functional basis in the sense, what is the purpose of the like your UAV? So if you're like US Army in the at the beginning days, what was the purpose of the UAV? Just for the search what is happening on the border or to destroy something. What those drones carry, you know, bombs also. So they will carry and they will drop there. So like that. So target and decoy, decay actually it is. Target and decay, providing ground and aerial gunnery, a target that simulates an enemy aircraft or missile. ठीक है. Reconnaissance. So here providing battlefield intelligence. What is happening in the area where the battle is taking place. Combat means providing attack capability to high risk mission. So if there is any high risk mission, so it will ensure that it will be successful. Something like logistics. UAVs especially designed for cargo and logistic operation. Means if you want to like send something, or maybe in the military, if you want to like see in future, you know what will happen. Nowadays you order something from Amazon or Flipkart. Some person come to your door, or even postman also. They come to your door address and deliver it, right, in courier. But in future, you know what will happen?
Amazon, and they all are trying the delivery by the drone. Like you order the food in Zomato and at all, right? Future what will happen? You know, if you order something, it will come by drone to at your door. So that is what the logistic. Research and development. Like research and development, like I told you the ornithopter at the beginning, right? The bird model. So you can use that bird model for the spying, because in the border, what will happen? Enemy will be very like too much aware of it, what activity is taking place. So in order to make them fool, you can make a drone like a bird, which is flying like a bird. So they cannot differentiate either it is real bird or artificial bird. So like that. Then civil and commercial UAVs. UAV specially designed for civil and commercial applications. So civil means like for general public, like if you are ordering something, so it is coming. Commercial means like what to say, this going to the your military, or maybe Amazon is using for the delivery purpose. Those all comes under the commercial. Because so these are the types on the basis of function. What is the purpose of the drone? Second is structural. The structural, I told you, if you have two rotors like two propellers, what that called? Bicopter. Means bicopter will be something like this, you know, right? Yes. Tricopter, how it will be? Three It will be routers. something like tricopter means three, like this will be there. And next one is quadcopter, which I shown you the video at the beginning, right? Like this. Now you know in the quadcopter we have two types. One is X, one is plus. X configuration and plus configuration. In the quadcopter we have two configuration. You know, in quadcopter we have two configuration. One is called X configuration. Let me write neatly. So we have two. What are those? One is X configuration and one is plus configuration. So you know what is X configuration quadcopter? In both, four will be there, four propeller, but the difference is like this. Just look at it. What is the difference? Tell me. I'm just gonna to draw. Are you able to find out the difference, guys? Huh? Yes, it is for X sides there, and for Sir, Y in for plus ये that in sides. Yes, yes, Amrit, tell me. सर एक्स कॉन्फ़िगरेशन में ये एक्स शेप में इसको डिजाइन करा है, लेकिन प्लस कॉन्फ़िगरेशन में इसे प्लस शेप में डिजाइन करा है. Yes, so in the case of C4 propeller, both are quadcopter, both are quadcopter. But Quadcopter. based on that, it will categorize. So X means and the vertices at the corners, your propeller will be fixed, right? Along the corners, so along the diagonals, you can say. And here, not along the diagonal, in the like bisectors, it will be, right? Okay, now let me play that video again and tell me what configuration this model is. Okay, this just tell me the video which I play at the beginning. Okay, I'll show you again. Just tell me what, just observe and tell me what configuration it is. Okay, I'll just play, just observe, guys. Okay, okay, can you see that? Yes, sir. Just observe and tell me what configuration. This is quadcopter or not? Yes or right? Yes, This is sir. a quadcopter, right? Now just observe what kind of quadcopter. X or Yes, plus? sir. I hope you have observed. Now you're not able to see. I'll go Yes, back sir. somewhat again. Just see it now. Here you can observe. Look at here. At this point you can see. Check it. Yes, Yeah. sir. Okay. Have you observed? What Yes, kind of, sir. anyone? Sir, Sir. Yes. X configuration.
No, it was not X. Check it properly. Again, I'll play once. It's a, It was a plus, sir. see that. It I'll was just go a back, plus, okay? sir. Just look at it. Just look at here. Your propellers is coming from the center, not from the corners. Yes or no, guys? Yes, sir. It is plus or X? It is Plus, sir. plus configuration. Very good. It's a plus configuration. Guys, if you mute yourself, it will be really good. Otherwise, it will again create what disturbance. Please. Okay. Now, if you have seen that properly, now it was plus configuration. It was, you know what? Plus. It was Plus something like this. configuration. Yes or no? Yes, yes, sir. It was something like this. So it is quadcopter of plus configuration. Is it clear? Right. Next, Yes. if you have 5 propellers, what is Hmm. that called? Having 5 rotor, it is called pentacopter. If 6 rotor, it is called Pentacopter. hexacopter. If you have 8, what is called? In mathematics, octacopter. It is Octacopter. having 8 rotor. Is it clear, guys? Everyone? Yes, sir. Yes, sir. So these are the types of drones. Okay, let's go for the next. Now, I'll play one video. Okay. Okay, can anybody say, you know that there is a cycle? My drawing is not good. Again, don't laugh. Okay, I'm going to draw a cycle. Okay, don't laugh. Okay, so how that cycle you turn? Like if you want to go left, right, how you take left, right? You anyone? So by handle, turning Yeah, it we have so handle in handle. cycle. We take right, we turn So right, we so cycle go right. turn If we turn left, cycle go left, right? yes, Isn't it? left. What Yeah. about car? Car, what we have to take left, right? Steering, It's also steering. right? Mm. Steering we have. Now, can you tell me how the Right. in aircraft or even drone, how the drone and aircraft, your आपके जो हवाई जहाज होते हैं, drone होते हैं, वो कैसे left right जाते हैं? How? कैन आई टेल? Aircraft. सर, जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें एक जॉयस्टिक लगी होती है जिसे मूव करने के बाद हम प्लेन को लेफ्ट और राइट मूव कर सकते हैं, लेकिन ड्रोन जो होते हैं उनमें जो प्रोपेलर लगे होते हैं उनकी स्पीड को कम या ज्यादा करके हम उसमें टर्निंग कर सकते हैं. Very good, very good, very good. So, as Amrit ने बोला यहाँ पे, in aircraft we have something called like joysticks. आपने games खेलोगे ना, playing games, video games, उसमें joystick Yes, वाला sir. होता है, ऐसे पीछे खींचते हैं तो वो आगे बहुत तेजी से बढ़ जाता है, ऐसे करके. तो उस तरह का joysticks होते हैं आपके passenger cabin में. You used to have in that pilot cabin, right? In the aircraft, joystick. So actually, when you talk about aircraft, you have something is called roll motion, roll, yaw, and pitch. What is that? Roll, yaw, pitch. Okay. Pitch. अब देखिए हवाई जहाज में रोल को कंट्रोल, रोल मतलब ऐसे हवाई जहाज को ऐसे जा रहा है सीधा, उसको ऐसे रोल करके ऐसे, आपने देखा होगा ना हवाई जहाज ऐसे स्मूथ टर्न लेता है लेफ्ट राइट, देखा है आपने ऐसे करके स्मूथ. Yes, उसको हम रोल बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? रोल बोलते हैं. और ये जो रोल आता है ये आपका एलरॉन्स के कारण आता है. किसके कारण आता है बच्चों? Aileron. के हवाई जहाज, अगर आप अपने हवाई जहाज का विंग्स और टेल, वर्टिकल टेल, पीछे वाला जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, उसमें देखेंगे कुछ छोटा सा पार्ट होता है वो ऊपर नीचे जाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो रोल एलरॉन के कारण होता है. यॉ जो होता है बाई AW, ये होता है आपका पता है किसके कारण? रडर के कारण. किसके कारण होता है? वर्टिकल टेल होता है, उसमें एक रडर होता है, ठीक है, उसके कारण. एंड पिच किसके कारण होता है? एलिवेटर. ठीक है, किसके कारण होता है? एलिवेटर. सो आप याद कर सकते हो ARE, आर, ठीक है ना. आर होता है जिसके कारण आपका ये कंट्रोल. वैसे आपका अब देखिए हवाई जहाज में आपका डिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, एलिवेटर, रडर एंड लाइक एलेरॉन. बट ड्रोन में ऐसा कुछ नहीं होता है. जैसे कि अमृत ने बताया, ड्रोन में व्हाट वी डू, वी कंट्रोल द स्पीड ऑफ द मोटर्स. So the motor which is rotating very high speed and the motor which is rotating very low speed. So what will happen? The drone will turn like this. The direction, which direction motor is rotating faster, in that direction it will bend like that.
So the motor which is rotating, like propeller is rotating very high speed, that will go up, and the propeller which is rotating with low speed, that will go down. So what will happen? Drone will bend like this. Are you getting? Because the propeller which is rotating very high speed, what will happen? It will throw air downward action very like with very high speed, right? So what will happen? Newton's action reaction. If action is very fast or very heavy, then what will happen? Reaction will be also what? The upward action will be heavy. So what will happen? In the where that the propeller which is rotating with very high speed, that side, what will happen? Drone will go like this up, and the direction and the place where the propeller is rotating slow, there drone will go down. So it will bend like this. Are you getting? So like that happen by controlling the speed of the motor. Now, how you will control the speed of the motor? How you can do that? Anyone? Sir, Yes, Amrit. आई थिंक हमें फ्लाइट कंट्रोलर में उसकी प्रोग्रामिंग करनी होगी पहले. नो, सी, अगर आप देखिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वोल्टेज का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. इफ यू गिव द लो वोल्टेज, प्रोपेलर विल रोटेट फास्टर और स्लोअर. जनरल आपने देखा होगा, बैटरी लो होती है तो लो वोल्टेज आता है, तो बल्ब क्या करता है? धीरे जलता है. और वोल्टेज ठीक होता है तो ज्यादा तेज जलता है, राइट? ज्यादा ग्लो करता है. सेम, if you provide low voltage, what will happen? Propeller will rotate slowly. If you provide proper voltage, propeller will rotate what? Higher, isn't it? It's all about the game of voltage. So there we have something component which will control the voltage. By controlling the voltage, you can control the speed of the motors or propellers, and that is how you go left, right, and at all. We'll talk about it. Okay, so let's go and see this, how the roll and all those motion happen in. I'm playing that. Can you see that screen, guys? So see, this Yes, is how sir. happen in the, there are three turns will be there: roll, yaw, pitch. I am just playing that. Just look at it here. Not getting play. Just a minute. Just give me a minute, guys. It's not playing. सर, Yes. सर बट जो प्लेन होते हैं सर, उनमें लेफ्ट या राइट होने के लिए रडर पैडल होता है सर, वो हमारे पैरों के नीचे होता है. और सर Yes, फ्लैप्स yes, वो लैंडिंग see, में टाइम देखिए, पैरों में पता है क्या होगा आपका? पैरों में सिर्फ वो वाला होगा, एलिवेटर वाला होगा, रडर वाला नहीं होगा. रडर वाला हाथ से होता है, हाथ में होगा आपका थ्रॉटल का. और रडर वाला जो लेफ्ट राइट लेने के लिए, वो आपके हाथ में होगा. वो पैर से सिर्फ आपका कौन सा होगा? वो वाला एलिवेटर वाला. ओके सर. ठीक है ना? This video is not playing. Just a minute. Just give me a minute, guys. I'll show you. Okay, it's not getting played over there. Okay, I can just open it. I'm going to open. Okay, I'll share the screen now, guys. Just look at it. Okay, guys, can you see the screen? Just look at it. Can you see that? Yes, sir. Yes, This sir. motion is called roll. Okay. Yes, sir. This one is called yaw. Again, this is called pitch. This is called roll. And this is called what? Yaw. Yeah. Okay. Yeah. This is called, Pitch. see, you have to tell me fast. You don't have to think. Okay. Tell me fast. Now, this is Pitch. Roll. Pitch. you repeat with the animation. Yeah. Very good. Again, Roll. once again. Yeah. Pitch. Pitch. रोड. Roll. रोल. Yeah. Once again. Once again. पिच. Pitch. Roll. 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 Yeah. 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 Pitch. Pitch. Roll. Roll. Yeah. Yeah. अच्छा, आप बताइए, इसमें तीन तरह के आपने टर्निंग देखे. एक पिच देखा. पिच मतलब ऊपर नीचे, नाक, उसकी जो नाक होती है, नोज, ऊपर नीचे. तो जो पिच वाला कब यूज होता है? कैन एनीबडी से व्हेन विल यूज द पिच मोशन? एनीवन? When the pitch motion will be used Sir, for the for aircraft? taking any directions. Sir,
when Up direction. something is there, mountains is there in side. No. Sir, See, it is pitch up, pitch down. No, ऊपर नीचे. Yes, Amrit. sir, landing and takeoff. Very good. So see, when you have to take off, what you have to do? You have to straight. It is taking runway. It is running, and then it has to nose up. So that is called pitch up. Then you have to land means it is going like this, and you have to land means you have to nose down. So that is called pitch down. So pitch का use हम कब करते हैं? Height को कम ज़्यादा करने के लिए, especially take off and landing में. Yes, sir. Now, when we Right will को use कम roll, करने के लिए. when we will use roll, anyone? Sir, left, right. Sir, when we have to go turn, take. We have to turn and it's smooth turn. See, Yes, यहाँ sir. से भी आप turn कर सकते हो. यहाँ से आपके sudden left right होगा. Sudden, मान लीजिए एकदम से कुछ आ गया तो उस टाइम हम yaw यूज करेंगे लेफ्ट राइट के लिए. बट रोल क्या होता है, वो भी लेफ्ट राइट होता है, बट स्मूथ लेफ्ट राइट. मतलब कैसे सीधा जाएगा, धीरे से ऐसे टर्न करेगा. जैसे आप साइकिल चलाते हो, एक टर्न आता है तो स्लोली करते हो, राइट. आप स्पीड कम कर देते हो अपनी गाड़ी की, राइट, फिर टर्न करते हो, राइट. और आपने अगर स्पीड कम नहीं करो, एकदम से टर्न करिए, क्या गाड़ी आपकी स्लिप कर जाती है. ठीक है. तो अगर आप टर्न कर रहे हो बिना स्पीड को कम किए हो तो वो यॉ में आएगा, यॉ लेफ्ट राइट. अगर काफी स्मूथ में लेफ्ट राइट ले रहे हो तो वो रोल में आएगा, राइट. So like, see, the thing is roll basically we use when we are going for like landing. Like what will happen when ATC, air traffic control, will not give the clearance that your aircraft can take off, like land on the airport. So that aircraft has to wait in the sky. So it has to take like round and round to the airport. When get the clearance from the ATC, then they have to land. This situation happened many times because see the same thing happen in the like railway also. See, when you are reaching to the station, what? At the outer, train will stop, right? 5 to 10 minutes that will wait. Why they will wait in outer before going to the platform? Why? Anyone? See, when you are traveling by train, so you have seen when you are reaching your destination, okay, to your like, it has to go to support platform number 1. So what will happen? Before reaching to a station, they will stop before the station itself. At the outer. Why they do generally? Anyone? Why they stop the train? Sir, can you repeat the Sir, question? shall I? See, my question is, when you travel by train, you see that when you are reaching your some station, they will not directly go to the platform and directly go. They will stop for some time before they reach to the platform or before the station for some time. Sir, Why it shall is I? so? I want others to answer. तो Sir, आपने shall I? देखा होगा जो आपके ड्राइवर्स होते हैं ट्रेन के, वो ट्रेन को रोक देते हैं, ठीक है ना, स्टेशन पहुंचने से पहले. तो वो इसलिए होता है, उनको जो प्लेटफॉर्म मिला होता है पार्क करने के लिए, ठीक है ना, दैट प्लेटफॉर्म इज ऑलरेडी सम ट्रेन माइट बी देयर. ओके. So just when that train will leave, then they will give the signal. The same happen in aircraft also. जब आपका हवाई जहाज आता है, लैंड करने वाला होता है, तो एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरफ से आपको सिग्नल मिलता है. आप लैंड कर सकते हो और नहीं कर सकते हो. अगर सिग्नल मिला आप अभी लैंड नहीं कर सकते हो, तो हवाई जहाज को राउंड करना होता है, उसी एयरपोर्ट का चक्कर लगाना होता है. तो एयरक्राफ्ट हैज टू टेक द राउंड एंड राउंड अराउंड द व्हाट airport. So in that case, roll will be useful. In that case, roll will be useful. Yes, Amrit, बोलिए. सर जब प्लेन एयरपोर्ट के आसपास चक्कर लगाता है तो सर उसे हम गो अराउंड कहते हैं ना. हाँ, go around ही बोलते. Yes. Is it clear? तो रोल का जनरली हम उस टाइम पे यूज करते हैं, ठीक है, राइट. चलिए आगे चलते हैं. So let me stop this and let me share the presentation. Okay, so let's go to the next. Okay, now I have another video. Just look at, like Amrit, you were asking, right, where the rudder and at all paddle, right? You can look at this video. I'm just playing it. Just look at this video, guys. This is how your aircraft actually works, how turning happens. Look at the video. This is pitch up, blue color. What is this called? Roll. You can see the green color. An aircraft is turning. Roll motion. Yaw, red one. So, yeah. You can look at the handles also, how that Picture. joysticks are there.
So अमृत आपका डाउट अभी क्लियर हो जाएगा, right? Yes. Which one is in the paddle and something like that? Red one is coming as a paddle, like you said. What you said? Rudder, right? What was that? Vertical one. Horizontally, like it can be in handle, and it may be in the paddle also. The blue one, that is elevator, and green one is roll. That is because of aileron. That is also in hand. You can see that. So yes. Sir. Yes. Anybody asking anything? Okay. Fine. Let's go for the next now. Okay. Now, just look at this one more video I have here. I'll just play. However, looks like it might be a Just look little at this bit is one tweaked, aircraft. but that's okay. We'll have to trim How the things happen. at the same time as we How the check, turning takes place. which is actually going to raise the nose. Just look at the tail part. This is called deflecting surface, and this is a horizontal And tail. you want This is called exactly this control. आपके बड़े हवाई जहाज So में when भी I होता pull है ये, back on the stick, जिससे the आपका elevator pitch up and pitch raises, down होता है, ठीक है? which is actually going to raise the nose. When I push forward on the stick, the elevator is going to lower, which is going to allow the nose to pitch forward. So make sure that that is in the right direction. That's तो ये जो आपको दिख रहा है सरफेस यहाँ पे ना, ये क्या है आपका पता है? एलिवेटर है। ये पीछे जो आपका पूंछ होती है हवाई जहाज की ना, हॉरिजॉन्टल टेल होता है, उसमें होता है। और इससे आपका पता है क्या होता है? जब ये नीचे जाता है तो क्या होता है पता है? आपका नोज डाउन होता है, पिच डाउन। और जब ये एलिवेटर ऊपर जाता है तो क्या होता है? आपका पिच अप होता है, ठीक है? उसी तरह और भी है आपका, यहाँ पे देखिए। absolutely critical to get that right. Back to the control horn. So, which again, mode 2 is going to be the left stick, and you want it to go in the same direction you turn the stick. Now अब देख रहे हैं आप वर्टिकल वाला, देखिए वर्टिकल वाला, इसे रडर बोलते हैं। And then when you release, you want it to come back in to as neutral of a position as you can get it mechanically. And that looks nice and tight. Trusting that this right stick. Now this one is aileron. आप Okay. देख पा रहे होंगे यहाँ विंग में कुछ छोटी छोटी सरफेस हैं जो कि आपकी ऊपर नीचे जाए। एक लेफ्ट वाली अगर नीचे जा रही है तो राइट वाली ऊपर जाएगी, ठीक है ना? एलेरॉन्स में अल्टरनेट होता है, एक्चुअली अपोजिट होता है, ठीक है ना? तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये एलेरॉन, इससे रोल मोशन The direction you want the ailerons to go is to raise up See, on one the is direction up, you're one is pushing the down. stick. So see how I push the stick right, the right aileron goes up. If I push the stick left, the left aileron goes up. And the other one will go down, so they're opposites. तो ये आपका क्या होता है? एलेरॉन्स होता है जो आपके विंग सरफेस पे होता है, ठीक है ना? सभी को क्लियर है ये बच्चों, दिस पार्ट? Yes, sir. Okay, perfect. So now let me go to the next slide. That's the direction you want that to work. Okay. Now let's talk about drones now. Okay. So I have something for your understanding how the drones it happen. See, in the हवाई जहाज में आपका क्या है? वो deflecting surface होती है, ठीक है ना? In the aircraft you have deflecting surface like aileron and rudder. So वैसे control करते हैं. But drones, how you control? Because in drones you don't have like these deflecting surface, aileron and elevator and rudder. So like as at the beginning Amrit mentioned that by controlling the speed of the motors or propellers, you can see. So now you can look at it, how the drones will go left and right. I'm playing this video, just watch. Drone using a Just look at controller the in speed mode of the 2, motors also, and that's the okay? most popular setting. That means the throttle's on the left. Push up, all the motors spin quicker. Just look at it. And the drone goes up in altitude. Drone is here, it Pull is going down, up. The opposite The happens. throttle is high, throttle is down. The left stick on the controller is also responsible for Yaw. yaw. And this is where we use motor torque to When our yaw advantage. is happening, see that when So if it we go push the left, stick to what the is left, happening? Look the at A it. propellers spin faster, with the torque making the drone yaw left or anti-clockwise. Push the left stick to the right and the opposite happens. The B propellers speed up and the torque makes the drone yaw to the right or in a clockwise direction. Let's look at the right stick on the controller now. That controls a couple देखिए of things pitch में as क्या हो well. रहा है? First of all, pitch. कौन सी मोटर Push तेजी that से घूम रही है? forward. The rear two propellers speed up, the drone tilts forward and moves forward.
Pull back and the opposite happens. The front ones speed up and the drone moves backwards. Pushing the stick to the left or the right will cause the craft to what we call roll. Push left, the B and A propellers on the right. अच्छा, यहाँ पे देखिए आपका ड्रोन क्या लेफ्ट जा रहा है राइट जा रहा है बच्चों? ड्रोन इज गोइंग लेफ्ट और राइट? लेफ्ट. ओके, सो यहाँ पे देखिए ऑरेंज कलर एंड ब्लू कलर दिख रहा है बड़ी पिक्चर में. ऑरेंज का मतलब है स्पीड बढ़ी है और ब्लू का मतलब है स्पीड क्या है, कम हुई है. तो देखिए क्या हो रहा है, जब लेफ्ट जा रहा है तो जो लेफ्ट वाले प्रोपेलर है ए एंड बी, जो लेफ्ट वाले उनकी स्पीड कम है या ज्यादा है? जब लेफ्ट में जा रहा है ड्रोन उनकी कम स्पीड है. कम है. लेफ्ट वाले और प्रोपेलर. जो राइट में प्रोपेलर्स हैं ऑरेंज वाले उनकी क्या है, ज्यादा है. ठीक है, तो जब लेफ्ट में ड्रोन जाता है इसे हम बोलते हैं रोल लेफ्ट. तो क्या होगा, राइट साइड वाले जो दो प्रोपेलर होंगे उनकी स्पीड बढ़ जाएगी. ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है. देखिए ड्रोन आपका ऐसे है, अब देखिए मैं बोल रहा हूँ लेफ्ट जा रहा है तो ड्रोन को ऐसे झुकना पड़ेगा. मतलब मान लीजिए ड्रोन है, ठीक है, अब ड्रोन को अगर लेफ्ट जाना है तो इसको ऐसे झुकना पड़ेगा. ये देखिए मैं आपको ये हो सकता है राइट लगे बट मेरे लिए लेफ्ट है. ठीक है, तो ये मैं लेफ्ट जा रहा हूँ. ठीक है, तो क्या हुआ, इधर वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है क्या हो गया, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको ये वाला, ठीक है, ये वाला क्या हो गया, ऊपर उठ गया. ये वाला पार्ट जो है ऊपर उठ गया है. ठीक है ना, ये ऐसे उठा है एंड इधर जा रहा है. तो क्या होगा, ये वाला पार्ट ऊपर कैसे उठेगा, जब यहाँ पे ज्यादा फोर्स लग रहा होगा. अभी देखिए फोर्स बैलेंस है, जब यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगेगा तो क्या होगा, ये ऐसे उठ जाएगा और इधर जाने लगेगा. तो यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो पंखा घूम रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोपेलर, इट विल रोटेट द एयर एंड इट विल पुश द एयर डाउन. तो न्यूटन्स रिएक्शन हैपन, एक्शन रिएक्शन. तो हमारा जो हवा है बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, तो रिएक्शन क्या होगा, ऊपर की ओर होगा. तो उस रिएक्शन के कारण क्या होगा, हमारा ये बेंट हो जाएगा ऐसे और फिर ऐसे जाने लगेगा. ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में हमें जाना है पिच के केस में, मतलब रोल के केस में, उस डायरेक्शन के मोटर्स की स्पीड को हमें कम करना पड़ेगा. यहाँ दिख रहा है आपको ड्रोन अभी लेफ्ट जा रहा है, तो क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड वाला क्या हो रहा है आपका, स्पीड कम हो जा रहा है. वही अगर राइट जाएगा, Right-hand side देखिए speed up and the drone heads left. अभी राइट जाएगा तो If क्या you हो go रहा है, to the देखिए right, क्या हुआ राइट में, राइट में जा रहे हैं तो राइट वाले की स्पीड कम हो गई है. इजंट इट? यस और नो गाइस? यस सर. A and B propellers on the left-hand side speed up and it heads एक to बार the मैं और right. प्ले करता हूँ, आप नोटिस करिएगा. ठीक है, That means the throttle's on the left. अभी थ्रॉटल देखिए. Altitude. थ्रॉटल क्या होता है, ड्रोन को ऊपर ले जाना नीचे लाना को थ्रॉटल बोलते हैं. एकदम से आपने चारों मोटर की स्पीड एक साथ बढ़ा दी तो उसको बोलते हैं थ्रॉटल अप. मतलब कि आपका जो वो नॉब है, ठीक है ना, आपके रिमोट में वो ऊपर की ओर कर दिया. आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ का जो नॉब है इसको क्या किया है, ऊपर किया हुआ है. अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ, ये दिख रहा है आपको, ये just look at here, knob is at the full position, right, at the top, it has gone up, right, yes or no, it is high throttle. तो इसमें क्या होगा, आपकी चारों मोटर हैं जो वो बहुत तेजी से घूमेंगी. the motors, all the four motor will rotate with very high speed, so it will push the air down with very high velocity. Then what will happen, so Throttle up. that put the mask, some cartoon mask on that, like Asprit, right, what is that? Okay, so for all the four propeller will rotate with same speed and very high speed, so it will push the air down, मतलब हवा को नीचे फेंकेगा तेजी से. so न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है एक्शन रिएक्शन. आप जितना एक्शन करेंगे उसका रिएक्शन होगा. तो हवा तेजी से नीचे जा रही है तो उसका अपोजिट रिएक्शन होगा, तो क्या होगा, उतनी तेजी से वो ऊपर जाएगा. जितनी तेजी से हवा नीचे जाएगी उतनी तेजी से आपका ड्रोन ऊपर जाएगा. तो उसको बोलते हैं थ्रॉटल अप. वही हम अगर क्या कर दें, स्पीड कम कर दें तो ड्रोन धीरे धीरे नीचे आने लगेगा. तो दैट इज द थिंग. तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे आप देखेंगे थ्रॉटल की बात करें तो चारों की स्पीड बढ़ती है, चारों की स्पीड कम होती है. ठीक है, देखिए Pull down, the opposite happens. देखिए क्या हुआ, The left stick on the controller is also जब responsible नीचे आ रहा था for चारों yaw. की स्लो हो गई, And जब this is ऊपर where जा we रहा था. use अब देखिए motor यौ torque देखिए, to our यौ में advantage. क्या हो रहा So है, if we push the stick to the यौ में left, रोटेट करना the होता A है क्लॉकवाइज और propellers एंटी spin क्लॉकवाइज. faster with the torque making तो the देखिए जब drone क्लॉकवाइज yaw रोटेट हो रहा है, left or anti-clockwise. अभी ये कौन से डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है बच्चों, यू कैन सी द एरो, व्हाट इज द डायरेक्शन, इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. मतलब कि घड़ी की सुई की दिशा में है, घड़ी की सुई के अपोजिट में. कि घड़ी की सुई ऐसे जाती है, ये उल्टा जा रही है, राइट, यस और नो. तो यहाँ पे क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है. तो जब आपका ड्रोन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है तो कौन से फैंस की स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है, कौन से वाले, ये आप देख पा रहे होंगे इधर, अपोजिट. ठीक है.
तो यहाँ पे देख पा रहे, ये जो क्रॉस में दिख रहा है इसकी ज्यादा है, इसकी ये क्या है आपका कम है, ठीक है। तो इसमें क्रॉस वाइज डायगोनली क्या होता है, स्पीड कम कर दी जाती है और डायगोनली स्पीड बढ़ा दी जाती है। वही इसका रिवर्स हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज में भी, ठीक है। प्ले Push the left stick to the अब right देखिए and the क्लॉकवाइज हो रहा opposite है, happens. The B propellers speed तो up इसलिए and क्या the होगा, torque ऐसे makes the रोटेट करना है drone इसको। yaw to the right or in a clockwise direction. Let's look at the right stick on the नाउ controller पिच में now. देखिए क्या That होगा, controls a अगर couple of आगे things की as ओर well. जाएंगे तो First of आगे all, वाले दो pitch. जो प्रोपेलर Push है that उसकी स्पीड क्या forward. हो जाएगी The बच्चों, आगे की ओर जाएंगे तो आगे वाले दो प्रोपेलर की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और पीछे आएंगे तो पीछे वाले प्रोपेलर की स्पीड कम हो जाएगी, rear ठीक two है। ये propellers देखिए speed आगे जा up. रहा है, तो The आगे वाले drone जो दो tilts प्रोपेलर forward उसकी and स्पीड कम moves हो गई है, forward. पीछे आ Pull रहे हैं back and the opposite happens. तो The क्या हुआ, front पीछे ones वाले दो speed up प्रोपेलर की and the स्पीड कम drone हो गई। moves backwards. समझ में आ रहा है बच्चों। Pushing the stick to the left or the Now, roll right में देखिए क्या will है, cause the craft to what we call roll. Push left, the B and लेफ्ट A जिस डायरेक्शन propellers में on जा the रहे हैं उस right डायरेक्शन hand की side स्पीड कम speed होगी, up and the drone heads समझ में left. आ रहा है आपको। If you go to the right, Yes, the sir. A and B अभी propellers देखिए on the राइट left जा रहे hand हैं, तो side राइट वाले speed दो up प्रोपेलर and it ब्लू है। heads to the right. I'm Shane from Dronology and that सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड रोल पिच मोशन कैसे होता है आपके एयरक्राफ्ट में, इसमें ड्रोन में। इज इट क्लियर? Yes, sir. नाउ लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो प्रिंसिपल तो हमने बात कर ली इस तरह से। तो ये देखिए कुछ इसमें ये वर्किंग ऑफ ड्रोन्स, इसमें हमारा अरेंजमेंट ऑफ मोटर होता है। अब देखिए जब हम मान लीजिए क्वाडकॉप्टर की बात करते हैं, ठीक है ना, क्वाडकॉप्टर की जब बात करते हैं, इसमें जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है वो क्या है, CW है। क्या है बच्चों, CW। एंड ब्लू वाला क्या है, CCW। व्हाट इज CW, व्हाट इज CCW? CW मतलब clockwise. Your fan propeller will rotate in the direction how your the needle of the clock goes, like that is called clockwise. And CC clockwise means counterclockwise. What is CCW? What is CCW, guys? CCW is counter Clockwise. Clockwise. मतलब कि, Counterclockwise. और आप बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। मतलब कि घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में। Okay, sir. क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी की सुई की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी की सुई की उल्टी दिशा। तो इसमें क्या होता है, जब अगर 4 क्वाडकॉप्टर है तो पता है ये आपका डिपेंड करता है आपका पोजीशन कैसा। आप इसमें देख पा रहे होंगे आप प्लस कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा वाला प्लस है कौन सा वाला क्रॉस है, कोई बता पाएगा? विच वन इज क्रॉस, विच वन इज प्लस? प्लस है और सेकंड वाला क्रॉस है, वेरी गुड। अब देखिए ये जो पॉइंट है ना, आपको ये जो पॉइंटर दिख रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पे एक पॉइंटर दिख रहा है, यहाँ पर मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है। चलिए मैं और किसी मैं रेड कलर से मार्क करता हूँ। आपको रेड कलर का पॉइंटर दिख रहा है यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. This will indicate like which one will go clockwise, which one will go anti-clockwise. So remember, right side of this pointer will be always counterclockwise. What it will be? Always CCW. Clockwise. So now see, Counterclockwise. if you look at the red point, right side, what is coming? The first one propeller is counterclockwise, and next one will be clockwise. Then again it will be CCW. Then again it will be CW. The same for the first plus configuration. Right side, whatever is coming first propeller, that is CCW. Then it will be CW. Then it will be CCW. Then it will be CW. समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा कहने का मतलब है जो पॉइंट मैंने आपको बताया, पॉइंटर बताया, जो शार्प पॉइंट है सेंटर पे, जो नुकीला पॉइंट आ रहा है ना, उसके राइट साइड में जो पहला प्रोपेलर होगा उसका, उसमें जो फैन लगा होगा वो किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा? दैट फैन विल बी रोटेटिंग इन काउंटर क्लॉकवाइज, मींस उल्टी दिशा में, सुई की उल्टी दिशा में घूम रहा होगा ऐसे। अगला वाला किस में घूम रहा होगा? ऐसे घूम रहा होगा। अगला वाला ऐसे घूम रहा होगा। फिर अगला वाला कैसे घूम रहा होगा? इस तरह से घूम रहा होगा, ठीक है। एंड देन व्हाट अबाउट नेक्स्ट? एंड दिस वन विल बी लाइक दिस। समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. दिस इज हाउ द अरेंजमेंट डन। सो जो नुकीला पॉइंट है उसके राइट साइड में जो पहला प्रोपेलर होगा वो हमेशा किस डायरेक्शन में घूमना चाहिए? उसको हमेशा हम किसमें रखते हैं? जनरली वी डू इन काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, sir.
Yes, sir. So now you can see that there is a something also called as H configuration. What is that? H configuration. यहाँ पर आपको H shape दिख रहा होगा, दिख रहा है H shape यहाँ पर आपको? तो ये वाला रॉन्ग है, ये वाला H shape करेक्ट है। इस तरह से करना है आपको, ठीक है? इस तरह से करना है ये वाला, ये H कॉन्फ़िगरेशन देखिए H के शेप का है। चलिए इसमें हम ज्यादा नहीं डीप में जाते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, वर्किंग ऑफ ड्रोन्स मैंने आपको वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखिए, जब हम प्रोपेलर की बात करते हैं तो दो हमने बोला ना, जैसे मैंने भी बताया यहाँ पे आपको, अगर हम इस तरह का बनाते हैं कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो बताइए कहाँ पर आपका क्लॉकवाइज आएगा। मैं कलर कर रहा हूँ, मैंने किया येलो कलर किया, ब्लू कलर किया, ब्लैक कलर किया एंड पर्पल किया। अब बताइए कहां पर क्लॉकवाइज होगा, कहां पे एंटी क्लॉकवाइज होगा? एनीवन? विच वन विल बी? होगा। व्हाट अबाउट येलो वन? मींस आई एम सेइंग मेरा जो शार्प पॉइंट है वो इस तरीके से है कुछ। अब ये शार्प पॉइंट क्या बताता है? दिस इज द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड दिस इज द बैकवर्ड डायरेक्शन। जो नुकीला पॉइंट है ना सेंटर में, वो बताता है आगे की कौन सी दिशा है और पीछे की कौन सी दिशा है। तो जहां पे जिस डायरेक्शन में आपका नुकीला पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट इज द शार्प पॉइंट, in which direction it is, that is the front direction, and opposite to that will be the back direction, and right side will be the right and left side will be the left. तो यहाँ पे बताइए कौन सा क्लॉकवाइज होगा, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज होगा? येलो क्या होगा बच्चों, बताइए? व्हाट विल बी द येलो वन? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? मैंने आपको बताया जो नुकीला पॉइंट होता है उसके राइट में जो पहला आता है वो क्या होता है हमेशा? व्हाट विल बी दैट? यस अमृत बोलिए। एंटी क्लॉकवाइज। यस, येलो वन विल बी द एंटी क्लॉकवाइज। CCW, और आप बोल सकते हैं ACW याद करने के लिए, ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज और CCW बोथ आर सेम। अच्छा, ब्लू वाला क्या होगा? सर क्लॉकवाइज। अब अगला क्लॉकवाइज, उसके बाद व्हाट अबाउट ब्लैक? अगेन CCW एंटी क्लॉकवाइज एंड अगेन CW। इस तरह से होगा। अब यहाँ पे देखिए, हम बोल तो रहे हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये होता कैसे है? मतलब कि क्लॉकवाइज का मतलब जो प्रोपेलर है वो क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में घूम रहा होगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज मतलब उसमें प्रोपेलर क्या होगा, काउंटर क्लॉकवाइज में। तो इसमें क्या होता है, हवा उल्टा फेंकता है, ऐसा कुछ होता है। अब देखिए हमारे दो तरह के प्रोपेलर होते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पंखे दो तरह के होते हैं। दोनों में आपको कोई अंतर दिख रहा है बच्चों? अंतर दिख रहा है? Sir, they are sir from upside they are opposite, You know, and first from one is, you know, downside what is they the are first like one? First one is a clockwise propeller, and second one is a anti-clockwise. Can anybody say why I am saying like that? You can observe it. Anyone? Sir, they are opposite. No, why opposite? Okay, but why I am saying first one is clockwise? Why not first one is anti-clockwise? Can you observe it? Okay, I'm just drawing the border. Okay, I'm just drawing the border. Okay, just look at the border. The first one and second one. Just look at it. According to the border, which direction it should rotate? Look at the red one. अगर आपने पंखा देखा होगा जो आपके सीलिंग फैन में लगा होता है, उसके हिसाब से बताइए, जो रेड वाला मैंने किया है अभी पहला वाला, वो किस डायरेक्शन में घूमना चाहिए? क्लॉकवाइज में घूमना चाहिए, रेड लाइक एंटी क्लॉकवाइज में घूमना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द शेप? में। यहाँ पे देखिए पूरा ऐसे कर्व है, और पीछे ये जो पार्ट है ये वाला क्या है, बेंडेड है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट कर्व है और ये वाला बेंडेड है। तो बताइए जिस डायरेक्शन में घूमेगा वो कर्व होना चाहिए या बेंड होना चाहिए? कर्व होना चाहिए। कर्व होना चाहिए। कर्व होना चाहिए। तो अब देखिए इसमें कर्व कहाँ पर है? पहले वाले में कर्व क्या कहाँ पर है? राइट में है, लेफ्ट में है? लेफ्ट में। राइट। सी दिस इज राइट साइड। तो ये प्रोपेलर किस डायरेक्शन में जाएगा? ऐसे जाएगा? यस सर नो? यस सर। तो ये क्या होगा, ऐसे घूम रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? ये सुई, घड़ी की सुई की दिशा में है कि अपोजिट में है? ये क्लॉकवाइज। तो इसलिए मैंने इसको क्लॉकवाइज। अब ये देखिए इसमें, देखिए दूसरे वाले में कर्व कहाँ पर है? लेफ्ट साइड में।
Yes, तो sir. इधर से तो ये किधर जाएगा, लेफ्ट जाएगा। और देखिए इसको इस तरह से समझिए, मैं चलिए आधा ऊपर वाला देखिए, आधा नीचे वाला पार्ट। लेट्स टेक द हाफ ऑफ द अबव पार्ट एंड हाफ ऑफ द बिलो पार्ट। लेट्स डिवाइड द प्रोपेलर। हाफ ऑफ द अबव पार्ट ऑफ दिस प्रोपेलर, so according to that it will go in this direction, yes or no guys? Yes, sir. And what Yes. about the below part? Let me do with the green color. Below part, can you see the below part, green color? So curve is this Yes. side, so it will go in this direction. So see Yes, sir. how it will rotate. From the top part it is going right, from the bottom part Yes. is going left. So how it will rotate? It will rotate like this. Clockwise. So what is this direction? घड़ी की सुई अगर आप देखेंगे तो घड़ी की सुई भी ऐसे जाती है ना, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ये क्या हो जाएगा आपका, क्लॉकवाइज। Clock. अच्छा अब चलिए अगले में आते हैं। अगले में क्या है आपका, what is the next one? In the next one, look at the curve part. In the upper half, the curve part is here. In this direction will go like this. What about the bottom part? What about the bottom one? Right. The bottom. So bottom curve here. So this will go this. So how it is going? It is going like this, right? So this is opposite of the needle of the clock or same direction of the clock? Guys, it is same or opposite? Opposite. So it is anti-clockwise, ACW or counter-clockwise. समझ में आ रहा है आपको? Everybody Yes, sir. clear? Yes, sir. So first one is clockwise or anti-clockwise? First one. Clockwise. Clockwise. And second one is CCW. Counterclockwise. तो अगर आपको मैं प्रोपेलर दूंगा तो आप पहचान पाओगे which is clockwise, which is anti-clockwise? Yes, Will you sir. able to? Perfect. We have another. We'll just we have 5 to 10 minutes. Okay, then we'll stop. It is this. Okay, so next is. So this we have already discussed, working of drones. This is also we have done. Okay, ये यहाँ पे देखिए कुछ चीजें होती है हमारा, मतलब कि क्लाइंबिंग, डिक्लाइनिंग एंड हॉवरिंग। कितनी चीजें, 3 चीजें होती हैं हमारे पास। क्या क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखिए, क्लाइंबिंग, डिक्लाइनिंग एंड हॉवरिंग। हॉवरिंग मतलब जब आपका जो वेट होता है, mg, WEIGST, ठीक है ना, mg, वो जो वेट है वो क्या है, जो नीचे मतलब कि जो आपका ऊपर जो फोर्स लग रहा है जिसे हम बोलते हैं लिफ्ट फोर्स, क्या बोलते हैं बच्चों, लिफ्ट। लिफ्ट जब वेट के बराबर होता है तो उसको बोलते हैं हावरिंग। देखिए आपका जो हवाई जहाज होता है, ठीक है, आपका जो हवाई जहाज होता है, ड्रॉ, इसमें क्या होता है, नीचे की ओर क्या फोर्स लगता है पता है आपके हवाई जहाज में? 4 फोर्स लगते हैं। नीचे की ओर क्या लगता है, वेट। ऊपर की ओर लिफ्ट लगता है जिसके कारण आपका हवाई जहाज उड़ पाता है। पीछे की ओर क्या लगता है पता है आपको, क्या लगता है पीछे की ओर? आगे की ओर होता है थ्रस्ट, जो आपको हवाई जहाज को आगे भगाता है, और पीछे की ओर लगता है ड्रैग। उसी तरह आपका ड्रोन्स में भी होता है। हवाई जहाज में 4 फोर्स लगते हैं, कौन कौन से बच्चों? लिफ्ट, ड्रैग, Lift थ्रस्ट, and वेट। थ्रस्ट मतलब जो इंजन के कारण आगे हवाई जहाज को ले जाता है। ड्रैग मतलब अब आगे जा रहा है तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो हवाई जहाज के केस में फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ड्रैग बोलते हैं। अगर भाई आप इलेक्ट्रिकल्स में बात करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं पता है, रेजिस्टेंस। तो फ्रिक्शन के अलग अलग नाम है अलग अलग चीज में। तो एविएशन में फ्रिक्शन का नाम क्या है बच्चों, ड्रैग, ठीक है। और ऊपर की ओर जो हवाई जहाज जिसके कारण उड़ पाता है उसको क्या बोलते हैं, लिफ्ट। और वेट तो आपको पता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण आता है, जिसे हम बोलते हैं mg, मास इनटू ग्रेविटी। तो जब यही बोल रहे हैं, जब ड्रोन में क्या होगा, वेट और लिफ्ट दोनों बराबर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, हॉवरिंग, तैरना, हवे में तैरना, ठीक है। और हवाई जहाज के केस में उसको बोलते हैं क्रूज फ्लाइट। क्या बोलते हैं, क्रूज फ्लाइट, जब आपका बैलेंस होता है। क्लाइंबिंग मतलब क्या हुआ, ऊपर जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे कौन ज्यादा है, वेट ज्यादा है या आपका लिफ्ट ज्यादा है? विच वन विल बी मोर? अगर क्लाइंबिंग हो रहा है मतलब ऊपर जा रहा है तो कौन सा ज्यादा होगा, लिफ्ट ज्यादा है या वेट ज्यादा है? lift. लिफ्ट विल बी मोर। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है,
सम ऑफ द फोर्स दैट इज लिफ्ट। अगर डिक्लाइनिंग मतलब नीचे आ रहा है तो कौन जा रहा है? वेट। वेट। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इस स्लाइड में। लेट्स नॉट गो इन टू मच ऑफ डीप, जस्ट यू शुड हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। तो 3 तरह की चीजें होती हैं, क्लाइंबिंग, डिक्लाइनिंग एंड हावरिंग। हावरिंग मतलब वेट और लिफ्ट बराबर है, क्लाइंबिंग मतलब लिफ्ट ज्यादा है, ऊपर लगने वाला फोर्स ज्यादा है, और डिक्लाइनिंग मतलब नीचे लगने वाला फोर्स ज्यादा है, द डाउनवर्ड फोर्स इज मोर। So this is also we can leave it. So we have already discussed tilting मतलब रोल को हम tilting भी बोलते हैं। या मतलब रोटेशन, ड्रोन ऐसे करके रोटेट करेगा अपने एक्सिस, जैसे धरती रोटेट करती है ना, अर्थ रोटेट्स on its own axis, that is called actually yaw motion, you can say. Like it is like anti-clockwise. No, it is anti-clockwise. Earth is rotating anti-clockwise, so yaw you can say anti-clockwise. पिच मैंने देखा, हम लोगों ने देखा आगे पीछे जाना। रोल भी देखा हमने, ये हो गया ऐसे टिल्ट होके ऐसे जा रहा है। ये ड्रोन का ब्लॉक्ड हाउ कैसे काम करता है, तो हमारा यहाँ पे देखिए, ड्रोन में क्या होता है हमारा, कई सारे पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे मेन हमारा जो होता है मदरबोर्ड, जैसे you have motherboard in your computer, right? Same, the brain, you can say the brain. So brain of the drone at the center. Okay, so what is that? Arduino or flight controller is the brain of the drone. And brain क्या होता है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट से जुड़ा होता है, अभी हम बात करेंगे। तो जैसे यहाँ पे दिखा है जायरोमीटर, मैग्नेटोमीटर, बैरोमीटर, ग्राउंड स्टेशन कंट्रोलर, पावर सोर्स, ईएससी इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर, डीसी मोटर। अब इसमें हम बीएलडीसी मोटर यूज करते हैं ड्रोन्स में, वी यूज बीएलडीसी मोटर इन द ड्रोन। देन जीपीएस, ग्लोबल पोजीशन, ये सारे क्या है आपके उससे मदरबोर्ड ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक रफ ब्लॉक डायग्राम है आपका ड्रोन का, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। पावर सोर्स मतलब आप बैटरी से पावर, तो मैंने आपको बताया था लिपो बैटरी के बारे में, याद है आपको? सैटेलाइट में लिथियम पॉलीमर, तो ड्रोन्स में हम जनरली लिपो बैटरी यूज करते हैं, और सैटेलाइट में कौन सी यूज करते हैं? लिथियम आयन, ठीक है। लियोन बैटरी इन सैटेलाइट, एंड इन ड्रोन्स विच बैटरी? लिपो बैटरी। और लिपो बैटरी को डायरेक्टली पावर हम किससे देते हैं? ईएससी इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोल। मैंने आपको बताया ना, आपको स्पीड कंट्रोल करना है तो उसके लिए हमारे पास होता है ईएससी इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। उसके बाद जैसे ड्रोन से आपका उड़ रहा है तो उसके सिग्नल चाहिए आपको, उसका डेटा चाहिए, तो उसके लिए ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम होगा, आपका स्टेशन होगा। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम मतलब उसमें ट्रैक करना। और इसमें देखिए आपका जो, अब देखिए यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेन की बात करते हैं तो कौन कौन से ब्रेन होते हैं आपके कंप्यूटर? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लाइट कंट्रोलर्स। ब्रेन ऑफ ड्रोन, व्हाट इज ब्रेन ऑफ ड्रोन? वी कॉल्ड एज अ फ्लाइट कंट्रोल। शुरू में मैंने आपको बताया था, ब्रेन ऑफ ड्रोन is nothing but flight control. Now in the market there are so many flight controllers are available. I have list out here. One is APM, that is autopilot, KK board, Pixar, NASA DJI, and Arduino. Arduino is a generally people use, is the good one in open source. So these are the some of the brains which is available on the market, like flight controllers for the drone. Okay, I'll show you the picture also there. Okay, so yeah, let's go to the next. नाउ फ्लाइट कंट्रोलर्स, अब देखिए जो ब्रेन होता है, ठीक है ना, इसमें होता क्या क्या है? फ्लाइट कंट्रोलर कंटेन्स द फॉलोइंग मीटर्स फॉर मॉनिटरिंग द ड्रोन। सो ब्रेन आपका मेन है, राइट? सो व्हाट दिस फ्लाइट कंट्रोलर कंसिस्ट, सो इट इज हैविंग एक्सेलेरोमीटर। सो व्हाट इट डू, यूज्ड टू फाइंड द टिल्टिंग ऑफ, मींस कितना झुका है आपका ड्रोन, हाउ मच इट हैज टिल्टेड। जायरोमीटर यूज्ड फॉर फ्लाइंग व्हीकल अकॉर्डिंग टू अवर इनपुट, मतलब कि जायरोमीटर क्या करेगा, जैसा हमें इनपुट दे, मतलब जैसा हमें क्या है आउटपुट चाहिए उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इनपुट देंगे। तो दैट इज डिसाइड बाय द जायरोमीटर। मैग्नेटोमीटर मत मींस यूज फॉर ओरिएंटेशन एंड नेविगेशन ऑफ द ड्रोन, मतलब कि ओरिएंट, मतलब कि वो कितना झुका है, इसको वापस लाना है, कितना अनस्टेबल है, उसको स्टेबल, यू हैव टू मेक इट स्टेबल फॉर दैट मैग्नेटोमीटर। देन बैरोमीटर मींस टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है उसको मेजर करने के लिए बैरोमीटर। तो दीस आर द फ्यू थिंग्स which is defaultly installed into the flight controllers. Okay, brain of the drone, you can say. So will you remember the names of the flight controller, guys? Some of that, at least two. Will you? Okay, अब देखिए यहाँ पे हमारा धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है। अब ये एक अलग दूसरा एक कंपोनेंट होता है जिसे बोलते हैं ईएससी इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। मैंने आपको बताया था we have to control the speed of motor in order to take the operation left, right, front and back for the drone. So for that we have another equipment electronic that is called ESC,
With the help of this only we control the voltage and control the speed of the motor. Means we increase the speed of the motor and decrease the speed of the motor with the help of this ESC. Okay. Then okay. So ESC is done. Okay. Now let's talk about components. Okay. So what these are the basic components required for a drone. Can anybody read? Anyone? Sir, Yes. second I. Yes. Components description. Following are the common components which is used for making drone. Frame, arms, motors, BLDC, propeller, ESC, electronic speed controller, LiPo battery is LiPo charger, flight controller is power module required for autopilot APM 2.8, transmitter is receiver, GPS and landing gears. Brushless. BL मतलब brushless and direct current. Okay. BLDC motor को बोलते हैं. Drones में generally we use BLDC motor and there is another motor called brushed motor. अभी मैं बताऊंगा what is the difference. Brushed motors. So आप जो खिलौने खरीदते हैं, generally in the childhood what we do, generally we purchase a toy car, right? In that whatever the like remote control car, in that motor, whatever motor you find out now, that is actually brushed motor. Okay. And in drones what you use, that is a BLDC, brushless direct current. तो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे ना, जो BLDC मोटर उसमें क्या होता है, आउटर वाला पार्ट मैग्नेट भी रोटेट करता है. जो आपका जो होता है ना मैग्नेट पूरा का पूरा जो in motor if you open you can find out there's a magnet. In the brushless DC motor what will happen, the magnet also rotate, but in the motor which you get in the toy cars you see only the rod which is coming out, that only will rotate, outer part will not rotate, right? But you know in the brushless BLDC motor that rod will also rotate, along with that magnet will also rotate. That is the difference between that. So brushed means brushed, like it is fixed, magnets are fixed. Brushless means there is no something which will not allow to rotate the magnet. So magnets will also rotate along with that. So that is the difference. So these are the high speed motors, you know, BLDC. You have propeller means that fan, ESC electronic speed control, LiPo battery and charging के लिए. You cannot charge LiPo battery with normal charger. You put your mobile charger and charge it. No, there's a separate balance charges come. So that then flight controller, as I mentioned, KK board, Picshaw, or you can use maybe NASA, this NASA M-Lite and DJI. Transmitter, remote or receiver. तो remote आपके हाथ में होगा, receiver आपके ड्रोन में लगा होगा. GPS ट्रैक करने के लिए, लैंडिंग गियर लैंड करने के लिए आपका होगा. ठीक है. तो ये बेसिक कंपोनेंट्स आपके ड्रोन के हो गए. चलिए अब मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ सबकी पिक्चर. तो दिस इज फ्रेम. फ्रेम आपको पता है व्हाई वी यूज फ्रेम, टू फिक्स अवर कंपोनेंट. ठीक है ना. तो फ्रेम कुछ इस तरीके से होता है, जैसे आपने देखा जो मैंने वीडियो शुरू में दिखाया था क्वाडकॉप्टर का, उसमें हमारा फ्रेम क्या था, लकड़ी का बना था, बालसा वुड बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? You cannot use all the material to make the frame. You can use carbon fiber. What you can use? Carbon fiber. It should be lightweight because it is a flying now. So flying machine, whatever it is, drone or helicopter, what it should be light. So carbon fiber. You can use glass fiber. You should find out. Okay. Otherwise, you can use what do you call this? Aluminium. Okay. Then you have something called balsa wood. Balsa wood. See, you cannot use general like wood, like lakdi. आप कोई भी लकड़ी नहीं, क्योंकि लकड़ी भारी होती है. But balsa wood is one kind of wood which is very lightweight. You know. So you can use. So I have used that. The video which I've shown in that we have used in wood. That is actually balsa wood. To you seen that now? This like this structure was there, right? So this total structure was made of balsa wood. It is lightweight. That's why. So if it is lightweight means you can lift easily. Otherwise you cannot lift. So that is it. So this is the frame. Okay. Now let me go to the next. So you don't need to go for definition. Now, this is the arms. Arms मतलब frame तो ये बीच वाला हो गया. Which one is frame? बीच में जो rectangle रहता है आपका. आप मोटर कहाँ फिक्स करोगे? मोटर तो कहीं भी फिक्स करोगे आप, राइट? तो उसके लिए ऐसे करके आएगा तरह से. Yes or no? Yes. You will be having something is called like this. Let me draw something like this, right? So these hands, you can say hands of drone. This is called what? Arms. Okay. We are not going to deep. Just you should have the awareness. What are the components are there? Okay.
Okay, next we have motors. So see, I told you two types of motors are there. One is BLDT, that is brushless DC motor. Another one is brushed motor. Okay. So why we use BLDC? Because BLDC is high torque motor. It can generate high torque and high like what? It can generate high speed, high RPM revolution per minute. So it will throw the air very fastly down. So you'll get the high force in the upward. So that's why we use that, because drone has to carry very high weight, right? If you are coming to the application, like it has to carry, like when you're talking about drone for agriculture drone, you have to carry 1 liter or 2 liter of pesticides in a liquid form. So you have to carry heavy weight, right? So for that BLDC is the best because it will give the high force generator. So now, so these are the difference. You can see the picture. So picture you can understand better. So you can see that this first type of motor you'll find out generally in your child days, right? Yes or no, guys? Brushed motor. इसमें क्या होता है कोई बताएगा पहले वाले मोटर में? Sir, Only this part will rotate. This rod, na, that rod is called shaft. What is called? Shaft. 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 It's not shaft. It is shaft. What is that? Shaft. Shaft. So only this rod will rotate. But in the brushless motor, BLDC, you know, this rod will rotate also, and this white and orange color which you can see, na, in which magnet, that part also will rotate. So you can think how it will be high torque. Is it clear? That is the difference, basic difference between brushless and what brushed motor. Is it clear? Yes, sir. Okay, somebody is asking any doubt. Raise hand as Aspreet. Yes, बोलिए. सर मेरे ट्यूशन का टाइम होने हाँ वाला आप है. जा सकते हो. ओके सर. थैंक्स. सर वी हैव गॉट ट्यूशन तो आई विल लीव. Okay, fine. So shall we stop guys here or shall we continue for 5 to 10? Maybe we can finish at least components. What do you say? It will not take more than 2 to 3 minutes. Shall we finish? Guys? Or shall I stop? Namrit, Anua, very less number of participants. Shall I? No, sir. Shall I close? Sir, we can finish now. Yes sir, finish. No, I have to listen others also. Na? Anuva, what you are saying? Finish sir these components. Okay, component. Amrit, what about you? Sir, please tell in Hindi. Yes? Sir, please speak in Hindi. मैं बोल रहा हूँ क्या मैं स्टॉप कर दूं या कंपोनेंट्स वाला पार्ट खत्म कर दूं? सर आप इसे फिनिश कर दो. ओके कंपोनेंट्स. राम आप क्या बोल रहे हो? मैं फिनिश कर दूं कंपोनेंट्स वाला पार्ट और स्टॉप करूं यहाँ पे? सर मैं बोल रहा हूँ कंपोनेंट्स जो है ना ड्रोन्स के उसको मैं खत्म कर दूं या स्टॉप कर दूं यहाँ पे? कल की क्लास में बात करें. आप क्या बोल रहे हो राम? चलिए मेजोरिटी बोले ही खत्म करने. तो ओके, इज इट क्लियर? हमारा यहाँ पे ब्रश्ड एंड ब्रशलेस मोटर में डिफरेंस क्लियर है बच्चों? ज्यादा डीप में नहीं जाना है आपको, बस इतना आपको अगर मैं मोटर देता हूँ तो आपको पहचानना आना चाहिए बस. तो ब्रश में क्या होगा, आपका ये जो बाहर वाला पार्ट है वो आप फिक्स होगा. ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, यू कैन नॉट रोटेट इट, ओनली दिस पार्ट विल रोटेट, यू आर एबल टू रोटेट. तो एक्चुअली व्हाट हैपन, मैग्नेट, यहाँ पर मैग्नेट होगा आपका, दिस मैग्नेट विल बी फिक्स्ड, मैग्नेट विल बी Fixed. So actually there are some, how it will be fixed, we use something called brush. It will be like a rubber, something like that. It will be tightly closed, so it will be fixed. That's why we say brushed motor. इसमें brushed होता है. Brushless मतलब brush नहीं होता है. So here what will happen, magnet is fixed over here. So इसमें this part will in brushless motor, this part will also rotate, and the shaft is like attached with this part, whole part. So your coil will be there inside that, right? Coil, magnet, everything will rotate. So here coil and this shaft and this outer part all will rotate. Is it clear difference? Yes, sir. So you know, if you want to fix a fan, so here what you have to do, in this only you have to fix, right? But here, you know, even you can fix your fan here also. If your, suppose this has broken, shaft has broken, you can fix over here, it will work. Is it clear? Yes, sir. That is it. Okay, let's go for the next. Then we have component propellers. You already know propellers, right? Two propellers will be there, clockwise, anti-clockwise. Now नीचे कुछ see, अब देखिए जब आप खरीदते हैं, when you purchase a propeller, you have to say something. 10 cross 4.7 inch. Dimension क्या होता है? 10 cross 4 point. Just for example here. अब 4 propellers है यहाँ पे, आप देख पा रहे हो 4 पंखे हैं यहाँ पर. It will be a like what group? 2 will be clockwise, 2 will be
एंटी क्लॉकवाइज से। देखिए आप जब भी प्रोपेलर खरीदेंगे ना तो आपको सिंगल पीस नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, ग्रुप में मिलेगा। आप खरीदोगे तो दुकान वाला आपको he will give you two, one is clockwise, one is Anti-clockwise. anti-clockwise. In one packet, two propeller will come. One is clockwise, one is anti-clockwise. Now here, what is 10? What is 4.7? So like 4.7, like it is kind of like pitch. Pitch means when it will rotate one time, how much circumference it will be forming. That is what something related. And 4.7 is the, it's this one. Okay. Okay, fine. Let's not go too much in deep. Just you should have the word into your mind. Okay, then I was talking about ESC. So what is ESC? Electronic speed control. It looks like something like this. Okay. Now listen here. These three parts. You can see these three parts, right? So these three parts are going to connect, you know, with motor. This yellow, red, and black wire. This is going to the BLDC motor. If you see the motor picture, I'll show you. Motor also having three wires. Wait, I'll show you. Can you see that? Motor, BLDC motor. How many wires are there, guys? 3 wires. One is black, yellow, red, right? Now these three wires are going to connect where? In the ESC. Just look at here. Can you see the red, blue, red, yellow, black, right? Yes. So this part is going for the motor. And what about other side? Other side you have three wires. One is looking like something different. Okay. So there's a something called servo motor. See, generally motor, what it do, it rotates 360 full circle, but servo motor rotates only 45 degree or 30 degree, like that. Like it is like this, up and down, like how that your elevators in aircraft do na, up and down. So for that we use servo motors. Now this wire can be connected to the servo motors. This wire you can see, right? And these two wires, black and wire, this will be going to the LiPo battery. Is it clear? Yes, sir. Okay, perfect. So ESC we have. What is the purpose of ESC? To control the speed of the motor. You can say to control the voltage of the, whatever the voltage you have to give to the motor. Okay. So now these are the battery components. We have battery and charger. So you can see left side LiPo battery. So if you search, you can find out this picture. What is the full form of LiPo? Lithium polymer. So drones में हम generally LiPo battery use करते हैं. Lithium ion भी करते हैं, but generally LiPo. Satellites में lithium ion होता है most of the time, and drones में lithium polymer. और ये चार्जर कुछ इस तरह से दिखता है हमारा. इसे बोलते हैं LiPo बैटरी. इस चार्जर में पता है आप कोई भी बैटरी चार्ज कर सकते हो. यहाँ पे ये बटन दिख रहा है, इससे आप चेंज कर सकते हो. आपको कौन सी बैटरी चार्ज करनी, विच बैटरी यू वांट टू चार्ज, यू कैन चेंज इट विद द हेल्प ऑफ दिस. दिस इज कॉल्ड बैलेंस चार्जर. तो इससे आपकी बैटरी खराब नहीं होती है, बैलेंस चार्जर. ओके, सो आप देख पा रहे हो. ये आपका लैपटॉप का एडाप्टर है, ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है. सो इट हैज कनेक्टेड विद द योर बैलेंस चार्जर, and here two pins are coming out. That pins is connected with battery, and here again like it is 3-cell battery or 4-cell battery. Different types of cell of batteries will be there. Okay, so according to that it will be connected to the balance charger. Okay, fine. So this is battery. So which battery we use for drones, guys? LiPo battery. LiPo. So we have separate. Now let's talk about main part, flight controller. That is called flight control and power module. So flight control क्या होता है? Brain of the drone. तो यहाँ पे some of the flight control मैंने आपको already बताया. What are the some of the flight controllers which are commonly used? अभी तो पता है आपका ये NASA DJI और Pixa बहुत यूज होता है. Even autopilot also. KK board. I have used the beginning which I shown you the video now. In that I have used KK board. The beginning one drone video I shown you, right? In that KK board use. So these are the some of the flight controllers. So generally at present people use NASA DJI or autopilot or Pixa. Pixa also the very familiar. And NASA is a very stable one. You know, if you want to fly a drone and want to learn, you should go for the NASA DJI because it is very flexible and easy to fly with the help of NASA DJI because it's very stable. If it is become unstable, automatic it will become stable. You know, you don't have to do it. So now these are the pictures of the. This is how your different brains flight controllers looks like. So first one is the autopilot APM. Second one is a Keiko board look like this. So Keiko board is what one time if your drone crash, it will destroy. It is like totally open, you can see. It is for like, it is very cheaper also, you know, KK board. For if you are a learner,
you can use this because it is cheap also, like 1,500, 1,000 rupee you will get it. But these are very costly, Pixar and at all, 8,000, 6,000 like that. So KQA board is the best one if you are the beginner. Now this is what the Pixar having so many, you can see pins are there, right? In the Pixar you can see so many pins. So it is having additional functions. So this is, and it is quite costly also. So okay, we have some more. That is okay. So this is NASA DJI. This is a very famous one. Most of the, if you attend any of the workshop who are conducting a drone workshop, you'll find out they are basically, generally they'll be using NASA DJI, this controller. Okay, this is very flexible one. And in this you can see this is called, this is the GPS. This part is GPS. Oh, no, not this is power module, not GPS. This is power module. Okay, and this is the GPS. Okay, is it clear, guys? And the last one is the Audiono. It is the open source, and generally people use any kind of project, not only drone. Like if you are making any project like line follower robot, you'll find out most of the engineering students use this Audiono for the project. Sir, I use this module, Audiano Mega. You have used, okay, different types of Audiono. There UNO is there, this is Mega, right? So different types of are there. So you can, this is open source actually. The thing is open source in the sense Audiono, if you want to make your own programming, you can make it and feed into it. But in NASA DJI what, it is default. You cannot change anything. What is given by the company, that only will be there inside it. But in the Audiono, you can do your own programming and you can run it. That is what called open source. So, and then at the last we have the transmitter and receiver. That is what the remote control through which. So this is called transmitter, in which you have the knobs through which you'll be controlling all the throttle and roll, yaw, pitch. Okay, knobs will be there. So like left, see ऐसा होगा. यहाँ पे एक knob है, देखिए आपको. You can see knobs here. See, like it is like this, right? So one knob is here, one knob is here. So this knob can go like this and like this. So here you can control true motion, and here also up and down and like this. So you have total 4 controls: throttle, roll, yaw, pitch, like that. So you have throttle, 4 controls, right? Throttle, yaw, roll, pitch, and you have 4 movements in the transmitter. And then the smallest one, there's a, you can see one CD compact disc, that is for, it will come with that for the software. And then you have, this is called receiver, which will be fitted. This will be transmitter, remote will be in your hand, and this receiver will be fixed on the where this drone. Okay, so whatever the signals will come, that will come from the receiver and go to the transmitter. And whatever the signals come from the transmitter, because we will give the inputs from the transmitter, so from the signals it will go to the receiver, and then accordingly drone will act. So the frequency is 2.4 gigahertz generally for this transmitter, and the range is 1,000 meter, means 1 kilometer. 1 kilometer height, 1 kilometer length, 1 kilometer breadth. That much range this generally this transmitter can go. Okay, operate. So that is the thing, and I think we have done with the component. Okay, we'll discuss this tomorrow. Okay, so that is what for today, guys. So any doubt you have, you can ask. No, sir. No doubt. No, sir. Yes, sir. So everything you understood today's class? Yes, sir. So Amrit, any doubt? Anuva, No, sir. No, sir. Santosh? No, sir. Why I feel, are you feeling bored? Today class was boring, full of lectures. Yes, No, No, sir. sir. Very interesting class. Okay, okay, guys. Very interesting So class. yeah, that is what for today, guys. Tomorrow we'll continue and we'll talk about some, like now drone is somewhat part is pending. That is, what is the application, and then what is that? This how the transmitter you operate, like which knob will go up so it will go roll, and that one. So only few things are pending. With that, drone will be done with it. Okay. So the next thing is we'll be starting most probably rocket, and which you are going to enjoy. Okay, and we have the rocket designing part also, that will be doing the last day. So most probably, if possible, Saturday will wind up. Otherwise, Sunday we'll do this
designing part, right? So yes. So thank you so much, guys, for joining, and I hope that you have enjoyed this today's session. And we'll see you tomorrow, right? Thank you, sir. Thank you so much. Have a Thank you, nice sir. day.